Hello everyone, this is Saloni Kabra. Welcome back to 12 Minutes to Law. In today's video, we are going to discuss one of the most important things. वैसे तो logical reasoning सबका favorite होता है in our 3-year LLB exams, but there are 5 most common mistakes जिसको अगर हम starting से ही समझ ले तो हमारे scores बहुत अच्छे improve हो सकते हैं. Logical reasoning is actually one of those subjects there where we can actually aim for our 100% score. Yes, it is definitely 100% possible. Just keep these 5 mistakes in mind, make sure you don't repeat them, and we'll hit that target together. So starting with the first one is that we actually wait for a course to get completed before we start giving mocks. या तो आपका जीके में कुछ बचा हुआ है या सम ऑफ योर एनालिटिकल रीजनिंग पार्ट इज लेफ्ट, लीगल और इंग्लिश. सो बिफोर वी एक्चुअली स्टार्ट गेटिंग टू प्रैक्टिस आवर मॉक्स वी थिंक दैट फर्स्ट वी विल कंप्लीट आवर कोर्स देन वी विल प्रैक्टिस. उससे क्या होता है, हमारा सारा टाइम पास हो जाता है सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने में, क्योंकि सिलेबस को जितना टाइम दिया जाए वो कोर्स उतना ही फैलता जाता है, स्पेशली फॉर जीके. So make sure as soon as you are comfortable with the understanding and the exam pattern, start attempting questions, start attempting sectionals and mocks so that you are comfortable with the idea of this exam. Second is not actually reading the question stem properly. So there are multiple subtopics in logical reasoning part like assumption, conclusion, course of action, cause and effect. So while we are reading the question, we get confused as what approach do we have to follow. Since all of these concepts are different, the approach to answers is also different. So our first aim is to understand the concept properly, apply the approach and then reach towards the right answer. The third mistake is while we are actually focusing on the question, we get too enthusiastic or happy when we see a particular type of question that we do not read the question properly. किसी question में कभी लिखा होता है except what the author do not believe in or does not follow, तो हम वो follow not ये वाले words ignore करके तुरंत आंसर पे पहुंच जाते हैं and then we end up selecting the wrong answer. So always remember to read the question properly. In case you find a word which would change the understanding of the question, just slightly underline it so that you don't forget what you have to actually do in the question. Now the fourth and the most common mistake is not analyzing your mocks. I know attempting a mock is much more interesting than analyzing it, but until and unless you do the post-mortem of your exam, you will not understand where the disease or the cause of death lies. तो हमें अच्छे से पोस्टमार्टम करना है हमारे डेड बॉडी का, यानी अच्छे से एनालाइज करना है अपने मॉक को. देन यू ऑल्सो हैव टू राइट स्पेसिफिक थिंग्स डाउन कि आपने कहाँ गलती करी है, किस पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन में करी है, कितने आपके इनकरेक्ट हुए हैं, उसके पीछे की रीजनिंग, व्हाई डिड यू गो फॉर अ पर्टिकुलर आंसर एंड हाउ वॉज इट डिफरेंट देन द एक्चुअल रीजनिंग ऑफ द पेपर. वंस यू एनालाइज द एग्जाम यू हैव अ क्लियर पाथवे ऑन वेयर एंड हाउ टू इम्प्रूव इट. This leads us to the fifth mistake that all of you make, which is repeating the same kinds of mistakes. Once you understand that assumption is your difficult part, आपने analyze भी कर लिया, आपको पता भी चल गया आपकी problem क्या है. Instead of repeating on that, we move to the next mock, do the same mistake, analyze it, then go to the next mock, do the analysis, and when we see the analysis, we realize, oh, that we are making the same mistake again and again. Instead of jumping to the next mock, sit, फर्स्ट मेक दैट वीकनेस स्ट्रॉन्ग अगेन. उसको एक प्रॉपर तरीके से ढंग से सॉर्ट आउट कीजिए जिससे आप सेम मिस्टेक्स को रिपीट ना कीजिए. आपके पास यू हैव अ होल प्लेग्राउंड टू मेक एनी मिस्टेक एज मच एज पॉसिबल, बट डोंट रिपीट द सेम वंस. इससे क्या होगा, जब हम फाइनल एग्जाम तक पहुंचेंगे वी वुड हैव मेड ऑल डिफरेंट काइंड ऑफ मिस्टेक्स एंड वुड बी स्कोरिंग द परफेक्ट मार्क्स. I hope all of these tips were helpful for you. Do let me know in the comment box what is the mistake that you are making again and again, and let's solve it together. All the very best.